क्रैक को मैं बहुत पॉजिटिव कॉनोटेशन देता हूँ हमेशा अपनी ज़िंदगी में. कोई मुझे बोलता है ना बंदा पागल है, मुझे पसंद आता है वो आदमी. मेरी माँ क्रैक है, क्योंकि जब मैं सुबह शूटिंग के लिए जाता हूँ 5:30 बजे उठ के, और उस दिन एक्शन की शूट होती है, वो पूजा में बैठ जाती हैं, और जब तक मेरी शूट ख़त्म नहीं होती है वो बैठी रहती हैं. फिर शूट ख़त्म होती है, मैं उनको फ़ोन करता हूँ, बोलता हूँ कि हो गई उनकी पूजा ख़त्म. वो होता है क्रैकपन, सारे दिन पैशनेटली किसी चीज़ के पीछे पड़े रहना. मेरे यहाँ पे एक दोस्त भी हैं जो कॉर्पोरेट हाउस में काम करती हैं. ही लीव्स इन द मॉर्निंग अराउंड 9. 3 साल का बच्चा है, रात को वापस आती हैं और उसको प्यार देती हैं. वो भी क्रैक है. सो क्रैक हर आदमी है जो पैशन के साथ कोई चीज़ के पीछे पड़ जाए, और जब उसको मिल जाता है तो लोग कहते हैं जीनियस है. सो दैट्स व्हाट क्रैक इज. एवरीबॉडीज क्रैक इफ दे फील लाइक बीइंग इट. मुझे लगता है हर आदमी वही करता है, हर फील्ड में हर दिन अपने से बेहतर करने की कोशिश करता है, और हर आदमी करता है. मैं भी कर ही रहा हूँ. इट्स बीन इनक्रेडिबल जर्नी. यू नो, ये जब फिल्म आई थी मेरे पास, इसकी मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा. इट केम टू मी फ्रॉम अ फ्रेंड ऑफ माइन, पराग सांघवी. वो शायद ऑडियंस में बैठे हैं कहीं. वो कहीं इधर बैठे हैं ऑडियंस में. ही इज़ वेरी क्लोज टू विद्युत एंड ही इज़ वेरी क्लोज टू मी. और उन्होंने कहा था कि विद्युत एंड यू हैव टू डू अ फिल्म टुगेदर, और मैं एक फ़िल्म लेके आ रहा हूँ, ये पिक्चर आपको करनी है. बट अनफॉर्चुनेटली पराग सांघवी का जो स्क्रिप्ट सेंस है इज़ नॉट दैट ग्रेट. और मैंने बोला कि दोस्ती यारी में मैं तो उनके साथ क्रिकेट खेलता था लोखंड वाला में. ओके, बिफोर आई टर्न अ मॉडल ऑल्सो, मैं इसको ना नहीं बोल सकता हूँ इस फिल्म को. तो मैं बोला यार मैं तो फंस गया हूँ अभी ये कौन सी फिल्म आ रही है मेरे पास. एंड ही गॉट मी दिस यंग मैन आदित्य दत्त होम, एंड ही सेड सुन ले, एंड आई लाइक सुना दे. Aditya was not ready. And he told me how Vidyut and him had kind of planned it, every action scene, every detailing. I was just blown away. I was surprised. Or, you know, I've been in the industry now for more than 2 decades. To get a surprise and to find something so refreshing was really fantastic. So thank you, Parag, for making this introduction and making me think. And thank you, Vidyut and Aditya and Abbas, for having me on this film, because it really made me push myself to an extreme level. And Crakk, if you ask me what it is for me, is cracking all my bones while making this movie. Wow. It's actually a very funny story, है ना sir? I was the last one to come on this film, like एकदम last minute में, and I was on my way to OT. And you know, when you go to OT, you're driving up those hills, right? Or bilkul network nahi hai. So sir had just called me to narrate the film. We did a Zoom narration. We did a Zoom narration, WhatsApp. And the network just switched off in the middle of the narration. And I'm like, hello, freaking out. calling, switching off. I said, yaar, kya luck hai? I'm getting a lead role and a narration's happening and I don't have network. So I was panicking, freaking out. Eventually, when I reached my destination, called him. He gave me the full narration. I said, sir, of course I want to be on board. I think not only is the cast superb, but the level of what they were trying to attempt and their vision was so grand. I was like, boss, मुझे करना है पड़ेगा यार. Fuck, you know, like if I don't do this, I'll be an idiot. And I knew कि अगर मैं हूँ ना इस project में, I will definitely push myself as an artist. And that's exactly what happened. You know, and you said like as a leading lady, of course, it's a bit scary. You know, of course it's scary. You don't know कि response कैसा होगा, लोग क्या कहेंगे. तो वो भी है कि typecast होता है ना sometimes. So people get comfortable seeing you doing some certain things, and then अगर आप कुछ अलग करते हो तो कभी-कभी response अच्छा होता है, कभी-कभी अच्छा नहीं होता है, because people they don't want to give you that chance. But मैं खुश हूँ क्योंकि sir ने मुझे chance दिया है, and of course Abbas sir ने भी. I'm really happy, and मैंने बहुत मेहनत किया इस movie में, and I just hope people appreciate it. Yeah, I've been living with the script for मतलब पिछले, I guess it's been 4 years that I was writing the script. Right. And we guys were back and forth writing, I don't know how many number of drafts.
And every action beat that you kind of see on that screen is actually written on paper than just gone there and kabhi kabhi hota hai, a lot of times it happens that we'll go on the set and we'll figure things out. It is usually happens, but I think so. We've had like Vidyut and I have had discussions over and over for I don't know how many months or years I would say, because we've written drafts of action. Right. Like I'm talking about, I've written six drafts of action, just the action beat I'm talking about. So every action that you're going to see in this film has actually been conceived, written, and then designed, and then actually shot. And obviously, the result is what you're seeing on screen. Genre kind of came to me just for the record. I did table number 21 before Squid Games. It was in 2013, and it was again a game-related film, which was designed back then. It was new for its time, because these live gaming shows and all came much later. So, and then Hunger Games have come, Squid Games have come, and so on. So yeah, it is a genre that kind of an action kind of came to me after I did Commando 3 with Vijay. So before I was majorly more into drama, thriller, and also I just wanted to bring a world together, which again, like as kids, we've seen Enter the Dragon and all these movies, Combat and Mortal Kombat and all these kind of films, but it's not done to. I would say just narrated well, keeping an Indian audience in mind, which is very important for me, because I always keep in mind that the narration doesn't need to be alien from the audience that we are catering to. I'm making a film for our country, for our masses, for our people. I'm not trying to make a Hollywood film. I'm making a pure, apna masi Hindustani movie. Right. So the narrative has to be that. And keeping that in mind, have simplified and brought the gaming world and the action together. Right. That's the marriage. Right. And I guess the audience now in our country, from a rickshawala to a guy flying a jet plane, is ready for it, because their horizons have opened, their visions have opened, and I think so they're very ready to see new things, experience new things in their language and their what they kind of enjoy and relate to. The thing is, when you're working with two biggest crack, then all the rest of the fighters or action directors who had come down from all over the world, they were looking at me and like, your director is crack, your hero is a crack. And I said, I know them. So what do we do? He said, they're asking me to go on the bridge. Hero wants to go on the bridge. The director is telling me, you can't take a shot, give me the camera. Climb on the bridge. And I was like, Adi, what are you doing? He's the director, action director. And Adi's like, I don't care. I can take that shot, and he did that. Right. Yeah. So pull the camera from the action Crazy. director. I didn't know that. Because then he kind of takes that risk. It's his production, like how Vijay's produced this whole thing. So it's his risk. He's putting his life at stake, because if something happens to the lead actor, it's not about them not being able to do it. There are too many careers involved to that film. From the DOP to the other actors, they've invested so much on it. So it's a risk. But then it's something that Vidyut, or say a Jackie Chan or a Tom Cruise, I'm putting those names because these are actors who kind of do their own stunts, and that's their belief. And if it's taken away from them, they're not doing what they love. And me working with him, I kind of now know him. Like, we know each other a little bit, and I know कि अच्छा, if he's saying it, Adi, I can do it, then it's the faith. And he has the same faith on me, कि you'll shoot it, I'll do it, don't worry on it. So when we went to that bridge, and my action director from Spain came and he said, who's going up? I was like, Vidyut's going up. No. And he went, he's like, I'm not shooting this. Right. So then, obviously, the bridge shot you guys saw, is actually Vijay on the bridge. And I had to design that. But there was a lot of precautions, safety obviously taken, 100%. But means you had to see, I wish we'll show you the footage someday of the crew reacting when I started designing the whole sequence. And he actually walked away. He said, okay, I'm not taking the risk, you shooting it. So I looked at Vijay, like, we do it? He says, do it. And we've actually shot it. So when he saw the first shot when Vijay did that, he came running back. Okay, we shoot. He can do it. I said, okay.
But yeah, we're hoping to show you the BTS someday and how it was actually there on location, because all the foreigners but the crew was very supportive, but they were just going crazy because we had to block the bridge down, we had to stop all the traffic, and it was not an easy process to shoot it abroad, especially. Right. We've always seen Vidyut doing, Commando, Khuda Hafiz. There are all these characters which are little within them. But they're a little more calm, stated. When they say their lines, they're very said in a certain tonality and a calmness. So when I wrote the script, I remember first reaction of Abbas or someone in the office saying, "Ke this is not sounding VJ. This is not sounding Vidyut," because they know him so much. They're like, "How will he play this?" And I said, "I've spent 3-4 years with him. Trust me, this is Vidyut." Right. Which you've not seen on screen. This is when you put the camera off, this is Vidyut. When he comes on for the characters like Commando, Khuda Hafiz, IB, they're all these officers, so he's always this straight face, calm. So, and that's what the audiences usually used to see him do. And I was like, no, I don't want to bring that. They've already seen it. We've got to bring something new on screen. And that's where, that's how Crakk is. And like I said, Crakk is VJ. So मेरे सिलेक्शन की थोड़ी एक स्टोरी है, लंबी है, वो फिल्म रिलीज़ होने के बाद मैं बताता हूँ. बट मैं अपना जो थैंक्स है वो 3 पार्ट में करना चाहूँगा. पहला थैंक्स मैं आदि सर को और अब्बास सर को करना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं मतलब मेरे बोलते हुए भी मैं शिवर कर रहा हूँ कि भाई का बड़ा भाई, मतलब ये तो मैं सपने में भी नहीं सोचा था. मतलब दिल्ली से जब मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रहा था तब भी मैंने नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा. तो उस काबिल समझने के लिए थैंक यू सो मच सर. और दूसरा, दुनिया के सबसे मेहनती इंसान के साथ फ्रेम शेयर करना. मतलब मुझे लगता है किस्मत बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है आपकी लाइफ में सक्सेस लाने के लिए, बट उसके पीछे की मेहनत को देखना और एडमायर करना ज़रूरी है. तो मैं भाई से IB71 के टाइम पे मिला था, बट शायद मेरी किस्मत कुछ अच्छा जानती थी, इसलिए मेरे को क्रैक का हिस्सा मैं बना. तो 15 साल में 10 साल की जो मेरी मेहनत है, शायद वो मुझे यहाँ तक भाई के पास लाके खड़ा कर पाई है. और जब मैं पहली बार मिलने गया तो मैं ऐसा लग रहा था, मैं फूले नहीं समा रहा था. जैसे कोई लड़का किसी सुंदर लड़की से रिश्ते के लिए मिलने जाता है ना, तो वो ऐसे गदगद हो जाता है अंदर से. तो मैं ऐसे शिवर कर रहा था. तो मैं भाई के लिए एक छोटे से हनुमान जी लेके गया था, क्योंकि मैं भाई को बहुत मानता हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज को. और मेरे लिए मेरे महाराज क्रैक में आदि सर थे. तो मुझे था कि मुझे अपना सब कुछ सर्व करना है इन्हें, जो इन्होंने निहाल में देखा है. अगर मैं उसको नहीं सर्व कर पाया तो मैं फिर किस बात का उन्होंने मेरे पे दाव खेला है. तो वो प्रूव करने के लिए मुझे पूरा जोर लगाना पड़ा. और हर शॉट से पहले मैं आंखें बंद करके महाराज का नाम लेता था और दिल में ये कहता था कि ये क्रैक मेरी लाइफ की उस स्ट्रगल को क्रैक कर दे जो मुझे कहीं और लेके जा सकती है. छत्रपति शिवाजी महाराज की. थैंक यू. एमी जैक्सन यहाँ पे हैं नहीं, मैं उनके ब्याह में बोल दूँगा कि मैंने बहुत मेहनत की. काफ़ी टाइम हो गया था, मैं हिंदी फिल्मों में नहीं आई थी, मगर मैंने आदि सर के लिए पूरे डायलॉग याद किए, एक्सप्रेशन समझे और इमोशन समझे. इट वॉज नॉट ईजी, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लव मी मोर देन यू लव मी इन द पास्ट. वो ज्वाइन जल्दी ही करेंगी वैसे हमें. और इसी पागलपन वाली सोच वाले लोग आसपास रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी आप पे बेट करेंगे. I've always been told by my fans, Jammwalians, they're like a family, and I listen to a lot of things they tell me, this is how you promote and all that. मुझे अक्सर बोला जाता था कि आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है, आपको बड़े बजट की फिल्म करने की ज़रूरत है. I thought it's right, and I needed to work with a leading lady who is really the star. You need to get a cast opposite me. ये सब की ज़रूरत थी उनके मुताबिक और लोगों के मुताबिक. तो मैंने ऊपर वाले को कहीं मन में बोल दिया होगा कि आई थिंक दिस शुड ऑल कम टुगेदर, एंड दिस इज़ एज सिंपल एज इट जस्ट फेल इन इट्स प्लेस. जैसे नोरा बोल रही थी, शी वाज लाइक द लास्ट मिनट एंट्री. बहुत मुश्किल होता है किसी को ढूंढो आप जिसको फिल्म में रोलर ब्लेडिंग करवानी हो. हमारी एक्ट्रेसेस फिट तो बहुत हैं, मगर उनको आना चाहिए. उसके बाद उनको समय देना पड़ेगा कि ट्रेनिंग भी करें. शी डिड. थैंक यू, यू गिव इट योर ऑल. That was amazing. Thank you. So ऐसे करते ना सब कुछ सही हो गया.
सब कुछ सही हो गया एंड दैट्स व्हाट यू सी नाउ, इट फील्स नाइस. बहुत अलग अलग, वो तेरी बहुत दूर की बोलते हैं, बहुत अलग अलग मोमेंट हैं जहाँ पे ये इस्तेमाल किया जा सकता है मेरी लाइफ में. जीतेगा तो जिएगा, मुझे लगता है कि अगर मैं किसी का दिल जीत लेता हूँ तो मुझे और जीवन मिलता है अंदर से, मुझे बहुत खुशी मिलती है. इन दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेस आई लाइक टू विन. मुझे लगता है कि अगर कोई कुछ मांगना चाहता है उसके मांगने से पहले ही दे दो उसको. मैं वहाँ पे मुझे लगता है मेरी जीत हो गई. सो ये है हर पल यार, अगर आपको लगता है कि आपको जीतने की ज़रूरत है, जीतना ये नहीं होता कि फर्स्ट पोजीशन सेकंड. आपके सोच में अगर कोई चीज़ आई और आपने कर दी, वो आपकी जीत है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है. तो मुझे ऐसा भी लगता है. मैं पिछले 14 सालों से ये कर रहा हूँ और मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि लग्जरी एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है. होता क्या है कि आपको आदत पड़ जाती है, कोई आपके लिए ये काम कर रहा है, वो काम कर रहा है, ये काम कर रहा है. जैसे ह्यूमंस के पहले पूंछ होती थी, उसका इस्तेमाल नहीं हुआ, निकल गई. लग्जरी के साथ भी ऐसा ही है. आपको इतनी मिलने लग जाती है कि आपकी ना जो नॉर्मल एबिलिटीज़ हैं वो ख़राब हो जाती हैं. मुझे लगता है कि हर आदमी को अपने साथ समय बिताना चाहिए. मौके मिले तो कपड़े उतार के बिताओ. और मैं हर साल करता हूँ, चाहे वो 1 महीने के लिए करूँ, 15 दिन के लिए करता हूँ. आई एन्जॉय बीइंग इन विल्डरनेस, आई एन्जॉय बीइंग इन प्लेसेस वेयर देयर इज़ नोबडी अराउंड. आई कैन डू एवरीथिंग एंड फेल. खाना बनता नहीं है तो रेडीमेड खाना बना लेंगे. सो इस तरह की चीज़ें करता हूँ मैं अपने आप को खुश रखने के लिए, अपने आप को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत 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 खुश रखने के लिए. सो दैट्स व्हाई आई डू इट एंड आई लव इट. आई थिंक वापसी करना एंड ऑल कुछ ज़्यादा ही हो गया, बट क्योंकि मैं कहीं गया नहीं था. मैं बड़े आराम से अपने फिल्में चूज़ करता हूँ और सोच समझ कर चूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से, कि अगर आप जल्दबाजी करते हो स्पेशली फिल्म चूज़ करने में, तो ज़्यादा करके आपसे गलतियाँ हो जाती हैं. और जब ये फिल्म आई थी तो मुझे पता था कि इसमें बहुत कुछ है जो हम ला सकते हैं. एक एक्शन फिल्म में इतना इमोशन लाना आसान नहीं होता. आई थिंक देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पर आदित्य कुड ब्रिंग अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इमोशन टू दिस कैरेक्टर, और वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए. वही नहीं कि अगर एक बस एक नेगेटिव कैरेक्टर हो या एंटागनिस्ट हो या विलन हो, जैसे हम कहते रहते हैं हमारी फिल्मों में. आई थिंक दैट वाज अ वेरी रॉन्ग कॉनोटेशंस टू गिव टू अ पर्सन. वो भी एक इंसान होता है, उस इंसान के भी इमोशंस होते हैं. उस इमोशंस को किस तरीके से आप निकाल सकते हो, उसकी बिलीफ सिस्टम क्या है, उसकी फ़िलॉसफी क्या है, वो बहुत मायने रखती है मेरे लिए. उसकी क्रैकिंग पॉइंट क्या है, कि जब आपका ये जो फिल्म है क्रैक, इट्स नॉट जस्ट क्रैक बिकॉज अच्छा बंदा क्रैक है, ये पागल है, वो नहीं है. देयर इज़ अ क्रैकिंग पॉइंट टू एवरी कैरेक्टर विच आई सॉ इन दैट स्क्रिप्ट, विच आई रियली रियली एन्जॉयड. And I saw the cracking point to my character, a cracking point to Vidyut's character, a cracking point for Nihal's character, you know, a cracking point for other characters within the film, for even Nora's character, वो जब जुड़ जाती है in the race. So there's a cracking point there for everybody. But to find that emotion, I think was very important for me. और उसके लिए हम साथ में बहुत बैठे थे. ये आजकल मैं गोवा में रहता हूँ, तो इनके लिए थोड़ी मुसीबत हो जाती है मुझे आके मिलने के लिए. तो ये आए थे घर पे, काफ़ी बैठे हम, एंड Days in Arjun's house. वी स्पेंड डेज टुगेदर कि ये व्हाट विल बी द फिलॉसफी. एंड आई थिंक वो एक बात है विच कम्स आउट. दिस गाय हैज़ हिज ओन एम्बिशंस. ही बिलीव्स कि वो राइट है. जो कोई गलत भी कर रहा है उसको नहीं लगता मैं गलत कर रहा हूँ, उसको तो लगता है मैं सही कर रहा हूँ, आप सब गलत हो. तो जब आप पिक्चर देखोगे, होपफुली आप मेरे साइड पे आ जाओगे. जब कुछ बड़ा होता है लाइफ में तो वो किसी वजह से होता है. और इतनी बड़ी जगह पे इतने बड़े लोगों के साथ बैठना अपने आप में एक अचीवमेंट है. और इतनी बड़ी स्क्रिप्ट का हिस्सा होना, मुझे लगता है कि आप किसी शहर जाते हो या कहीं प्रोफेशन चूज़ करते हो, आप नाम कमाते हो, आप पैसा कमाते हो, आप जैसे भाई ने बोला लग्जरी लाइफ सब कमाते हो, बट एक विश्वास कमाना एक अलग चीज़ होती है. शायद कहीं ना कहीं वो एक विश्वास मैंने आदि सर के विजन में जीता, या फिर वो थ्रू द प्रोसेस जीता मैंने. तो उस विश्वास का मैं कर्जदार हमेशा रहूँगा. और
अगर उनके विश्वास पे खरा उतरने के लिए कि मुझे इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया, चलो भाई विद्युत भाई के साथ नाम आ रहा है, अर्जुन सर है, नोरा है, बड़े नामों के साथ नाम जुड़ रहा है, चलो अब तो गाड़ी चल पड़ी, नहीं ऐसा नहीं है। उसमें उस किरदार को जब तक मैं किस वजह से भाई लड़ रहे हैं फिल्म में, अगर उस वजह को की कील नहीं ठुकेगी तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। कि उनको उम्मीद है कि मैं सिर्फ अच्छा करूं और बहुत अच्छा करूं। जब ऐसा होता है तो आप एक्स्ट्रा करते हैं हमेशा। आपको भी लगता है कि अगर कुछ पागलपन करूंगा हो सकता है इनको ये पसंद आ जाए। सो आई एंजॉय पुशिंग द बार, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स, जस्ट दैट दिस इज व्हाट्स टू बी डन एंड आई एंजॉय इट। For your Definitely, character. yeah, you're right. It is an era of influencers now. I think, you know, a lot of them have become stars in their own right. The kind of numbers they garner, the reach that they have. And it's quite exciting because I feel like the Gen Zs now have a different way of looking at careers, per se. A lot of them just, we used to grow up and say, oh, we want to be like a lawyer, engineer. Now it's like, you know, a 12-year-old girl or a boy will be like, I want to be an influencer. And it's actually a real job. People make a lot of money out of it. But it's not an easy job. You have to have a personality. So not just anyone can be an influencer. So with this role, I understood that Alia, because my character's name is Alia, she had to have a bubbly personality. It had to stand out, and it had to grab people's attention, the audience's attention, and that's what influencers do essentially. अभी नहीं तो कल तो हो ही जाएगी, कल नहीं तो परसों तो हो ही जाएगी। बट जैसे ये जो जिक्र कर रहे थे, हमारे ट्रेलर में लास्ट में एक सीन है जहाँ पे मैं ब्रिज पे चढ़ता हूँ। इन्होंने बहुत तमीज़ से बता दिया क्या हुआ था। असली में ये नहीं हुआ था। लाइट जा रही थी, ये लोग रिहर्सल कर रहे थे, लाइट जा रही थी, रिहर्सल कर रहे थे, स्टंटमैन केबल लगा रहा है, हो नहीं रहा है। एंड मैं वेट कर रहा हूँ कि मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। फिर बहुत देर हो गई। आदित्य दत्त ने कहा नहीं विद्युत, दिस इज़ नॉट सेफ, वी शुड नॉट डू इट। सो फिर और देर हो गई। फिर मैंने अब्बास को बोला कि मुझे करना है। सो उसने बोला अभी बहुत देर हो गई है। सो आई वेंट ऑन द ब्रिज एंड आई सेड मुझे ये स्टंट करना है, अब मैं प्रोड्यूसर हूँ, सुनो मैं करूँगा। सो आदित्य दत्त आ गए, ये हकीकत है। फिर आदित्य दत्त आ गया, ऐसे दत्त तुम्हें करवाना पड़ेगा, यू नो आई कैन डू इट, यू नो आई कैन डू इट। ही सेड आई नो यू कैन डू इट। सो आई सेड देन यू शुड शूट इट। तब तक एक्शन डायरेक्टर जा चुके थे क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा। सो कोशिश तो कर रहे हैं, पूरे इस चीज़ में हम कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल लोग बोलेंगे अरे वाह कमाल हो गया, बोलेंगे तो सही। I think one of the most physically challenging films. पहले बार तो बोल दिया था कि ठीक है ये सब एक्शन होगा, it'll be so amazing, we'll do this, do that, and you feel okay, I'll be able to do all of that, you know. But when you hug a Vidyut and you feel these muscles which you didn't even know existed in certain bodies, and I am quite a fit guy, but I was like, अरे ये कौन सा जानवर है? You know, I had to really up my game on that department. It's not only that, it was not only just Vidyut. I think Vidyut and Aditya together had also selected this fantastic group of athletes from all over the world, okay, who come and are actually part of my this Maidan, the place where this whole contest is going to take place. But those guys, my God, they were fantastic. I was so inspired and in such awe in this movie, watching all these people do their things. So I had to constantly push myself. I had to constantly say, nahi, mujhe wapas karna hai. I have to do it. I have to do it. And in that process, I did slip a disc or two. And I was laid up in bed. And they were very kind to cancel shoot for a good 2-3 weeks till I could recover and come back and finish the sequence. But yeah, we had to do it. And on the last day, Vidyut didn't leave me there also because the disc that had got repaired, he displaced it again. So I had to go back into the hospital. So that's how we are, and that's how Crakk was. And I don't think I would change it for anything, but I don't know if people really get opportunities. आप पूछ रहे थे कि you know हॉलीवुड में लोग अपने अपने स्टंट्स करते हैं या क्या कभी कभी मौका ही नहीं मिलता. जैसे कि आप कह रहे हैं कि वहाँ के सारे एक्शन डायरेक्टर्स आए थे एंड दे वर ऑल फैंटास्टिक इसलिए आए थे. मगर मज़ा तो तब आया जब हमारे इंडियन एक्शन डायरेक्टर आए थे हमारे सेट पे और जब हमने तब एक्शन की, जब रवि वर्मा आए थे. आई थिंक दैट वाज द रियली फन पार्ट ऑफ इट. अब चलो यार अब घुसे मारो यू नो कुछ टेंशन वाली बात ही नहीं है. तो यू नो इंडिया इज़ अप देयर एंड वी आर डूइंग वेरी वेरी वेल. एंड ट्रस्ट मी, जितना हमको मिलता है उसके अंदर जो इन्होंने किया है इस फिल्म में वाकई कमाल का है.
जब मैं कनाडा में थी बचपन में, मैं हमेशा रोलर ब्लेड्स कर रही थी, बट इट वाज लाइक नाइस स्ट्रीट्स, नो पॉट होल्स, नथिंग. तो यहाँ पे इतने सारे क्रैक्स है, इतने सारे पॉट होल्स है, एंड सर बोल रहा है कि प्लीज़ तेज से जाना है रोलर ब्लेड्स के साथ. I'm like, तेज से? इतने सारे पॉट होल्स, how? It's not possible. So I said, chalo, let's just do it, you know, because Arjun sir is doing his stunts, Vidyut sir is doing his stunts, तो मुझे भी करना सर यार क्या चाहिए. कर रहा है? I love it. Vidyut is also, वो भी कर रहा है अपना stunt. So I'm like, मुझे भी करना है. I didn't want to look like, नहीं मुझे stunt double चाहिए. So I was like, चलो करते हैं. So we're going with speed, ta 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 ta, and then suddenly I just fall. Oh, उसके ऊपर क्या है? हमारे बीच में एक rope है. Okay, so he's got a rope on his waist. मेरे waist पे rope है, and he's going and I'm going ta 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 ta. Full speed में जा रहा हूँ, full speed में जा के रहा हूँ. साथ boom 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 boom. Then I fall. So when I fall, he doesn't know that I have fallen. So he's going. So he's dragging me with speed. So I have been dragged across this whole concrete area, and I'm like, You know one thing, no? A martial arts guy knows everything. उसको सब पता है कौन गिर गया है, कौन किधर है, क्या हो रहा है. you think, उसके अरे? आंखों के पीछे भी आंखें होती हैं. it was so, oh my God. तो मैं चिल्ला रही थी, फिर उसने रुका, and he's like, oh my God. पूरा पीछे ना glass. Yeah, and we all were very concerned yeah. if we got the shot or not. Yeah, I know that because you're like, it's okay, shot mila hai, it's fine, Nora, thank you. And I'm like, call a doctor. मैं पीछे था स्टेज के और मुझे आदित्य दत्त ने एज अ डायरेक्टर पूछ ही लिया. वो अर्जुन भगाता हुआ गया था गाड़ी को, तुम क्यों नहीं गए? ये पीछे बैठी थी, गिर सकती थी. बट इनको चाहिए कि एंट्री जब आप लोगों के सामने आया तो फुल स्पीड में आओ, इसीलिए धीरे गया था. And also to add, when I got hurt, I wanted to act कि no, मैं भी Vidyut की तरह हूँ, it's fine, I do my own stunts. So I got up, I'm like, I'm fine. Everyone's running, ma'am. I'm like, I'm fine. But I was not fine. I cried in my vanity like a baby. I never write, do not try this at home, क्योंकि अगर आप घर पे ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? और जो घर पे अक्सर ट्राई करते हैं वो अक्लमंद होते हैं. ऐसा कोई बेवकूफ़ नहीं होता है कि छलांग मार देगा. हर आदमी में एक क्षमता होती है. अक्सर हमें लोग रोक देते हैं और वो डर हमारे अंदर आ जाता है. मुझे ऐसा लगता है. उसके अलावा मैं गेमर हूँ. मैं पिछले 15 साल से गेमिंग कर रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वहाँ पे कई चीज़ें मैं देखता हूँ. एक बिल्डिंग से छलांग मारी, कैसे मारी, मैं बचपन से, मुझे आई रियली एन्जॉयड. और फिर एक वो होता है कि डू नॉट ट्राई दिस एट होम. सो गेमिंग करते करते अबाउट 8 years back, I met these 2 young boys. One was 13 and one was 14. And वो मेरे घर आए थे एक पार्टी में किसी के साथ और वो गेमर्स थे. सो उनके थ्रू मुझे पता लगना शुरू किया कि यार ये तो बहुत फिजिकली डिमांडिंग गेम है. अगर आप कभी VR मशीन में बॉक्सिंग करेंगे आप हैरान हो जाएंगे. सिमिलरली उस दौरान मेरी मॉम मेरे साथ रह रही थी एंड शी सर्टन एज, और मैंने रियलाइज़ किया इनके रिफ्लेक्सेस स्लो हो रहे हैं. सो आई स्टार्टेड मेकिंग हर प्ले अ गेम एंड आई रियलाइज कि उनके रिफ्लेक्सेस तेज हो गए बिकॉज आफ्टर सर्टन एज. सो ये सब जब मेरे दिमाग में आया एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग द फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट कि आप कई चीज़ें सीख सकते हैं बिना किए हुए. सो मैंने लड़कों के साथ मिलके एक गेमिंग कंपनी शुरू की which has been running for 2 years, and with Crakk we are launching the first game that is called the Crakk the Run. क्योंकि आप घर बैठे बैठे, मगर एक और इम्पोर्टेंट बात है, आपको पता है मेरे कई दोस्त हैं, ज़्यादातर दोस्त हैं जिन्होंने कभी गेम ही नहीं खेली है, बिल्कुल नहीं खेली है ऐसे मेरे दोस्त. सो ये उनके लिए है जिन्होंने कभी नहीं खेली. उनको समझ आएगी एडिक्शन होती क्या है. और एडिक्शन नेगेटिव नहीं है. आपको समझ आएगा आपकी आंखों की फुर्ती, आपकी आंखों की रोशनी, आपके रिफ्लेक्सेस कितने तेज़ होते हैं. सो वील बी प्रेजेंटिंग द गेम आफ्टर दिस, जिसका मैंने आके एक बार आजमा लीजिए. नहीं खेला है तो आके देखिए तो सही कर क्या रहे हैं हम लोग. इट्स कॉल्ड क्रैक द रन. सो आफ्टर दिस वी हैव अ लिटिल स्मॉल लिटिल प्लेस, ट्राई इट. कभी नहीं खेला तो पक्का आइएगा.